Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome to the Homely Remedies series, episode 24 by the Homely Courses channel. Khush Ahmadid Nazreen. Let's start with, can you guess what is it actually? It is water chestnut. It is also called as Singhara, which is actually really healthy for your health. It is a type of fruit and it has so many benefits, so that we have made this video for you all as a remedy, because it is a best remedy for improving your immunity power. इसके अंदर जिंक, आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, प्रोटीन और विटामिन C भी होता है, जो कि ताकत फराहम करता है बॉडी को। यही वजह है कि हमें इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए और इसका सैलेड भी बनाया जाता है और हेल्दी डाइट प्लान्स के लिए ये परफेक्ट है। क्या आप जानते हैं ये कहाँ पाया जाता है? ये तालाब में कमल के फूल की तरह पैदा होता है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। We have 3 different color water chestnuts. One is black, other one is green, and one is purple color. Do you know, friends, these water chestnuts relieves digestive problems. सिंगाड़े के अंदर फाइबर होता है, जिसकी वजह से ये मैदे के लिए बहुत मुफीद साबित होता है और खाना हजम करने में मदद करता है। और इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है। एंड ऑल्सो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छी खासी ताकत मैसर हो जाएगी और ये मज़ेदार, फ्रेश और जूसी होते हैं। इट एक्ट्स एज अ कूलेंट एंड रिफ्रेशिंग। इट इज़ हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। आप इसे स्टीम करके खा सकते हैं, बॉईल करके खा सकते हैं, या फिर आप इसे इसी तरह से बगैर पकाए हुए भी खा सकते हैं। It's your own choice. It helps to improve the blood. As you can see, friends, this is having so many benefits. So why we are not using it in our day-to-day life? And we should add it in our dietary plans because it is really healthy. We have thoroughly washed it 2 to 3 times and we are going to boil it in the water. Don't use too much water to boil it. We are boiling in a large quantity so that we have added water accordingly. Okay? इसके इस्तेमाल से हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। अच्छी तरह से इसे बड़ी आंच पर बॉईल कीजिए जब तक कि ये अंदर से टेंडर ना हो जाए, उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। Here you can see this black and purple water chestnuts, यानी कि सिंघाड़ा, and it is milky white from inside. Here we have some more water chestnuts, so we are going to remove its cover completely. Then we will store it as per our requirement. So like this, you have to remove its cover and it is really easy to remove it. You can use a knife to remove the cover if you want. It is also good for cholesterol and blood pressure. हमने इसे कवर कर दिया है और अब हम इसे बॉईल करने जा रहे हैं। So friends,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिसकी वजह से आपको हमारे आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपको अच्छी तरह से वाटर चेस्टनट्स को वॉश करके इस्तेमाल करना है क्योंकि वो गंदे पानी में ग्रो होता है और आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं कवर निकालने के लिए। Here we are going to store some fresh water chestnuts and we have taken a container and we have added a tissue paper into it, and then we are going to add some peeled water chestnuts into it. You can see here like this. You can remove its cover easily by using your both hands. Friends, you can eat it as it is without boiling, and it is really tasty and refreshing fruit, and it is easy to consume. You can use it in the evening during your snacks time. From here on, stop using fast food and use this healthy snacks which is having no efforts in making, and it is less time consuming. It becomes easy to remove fast food from your healthy diet routine by adding this healthy fruit in your day-to-day life. Keep it into the container and cover it and place it into your fridge. Here we have boiled our water chestnuts and we are removing it from our pot, and it is hot right now, so that you have to wait for few moments to cool it and low down the temperature, and then peel off the water chestnuts cover and then serve. You can steam it in less quantity of water by avoiding the boiling method. If you want, you can see it is done completely. Now let's peel off the cover. It is looking black in color after boiling, as you can see, and it is light in color after boiling. कितने खूबसूरत हार्ट शेप के नज़र आ रहे हैं। हम इसे इवनिंग स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हमने जो वाटर चेस्टनट्स स्टोर किए हैं उन्हें हम दूसरे दिन इवनिंग में इस्तेमाल कर लेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, you can easily present it in front of your child. This presentation is looking gorgeous, and also you can serve it with your family and friends. Okay friends, we will be back with another episode. Till then, Allah Hafiz and goodbye. Thanks for watching.